Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be happy and healthy. In our previous lessons, we discussed about parts of speech, the three main parts of speech that were noun, pronoun and adjective. Today we will discuss about the verb, which is the fourth part of speech. Do you have any idea about verb, that what is verb? Okay, let me tell you. Look at the definition. Verb describes an action, state, event being done by someone or something. जो someone or something is noun. Okay, every action word is verb. Look at the example. The girl is eating. He helped me. They are doing words. They are verbs. So every action is verb. Run, eat, sleep, reading, writing. So such words are called verb. These are action words. Okay, kinds of verb. We have 13 main kinds of verb, which are transitive, intransitive, action, helping, linking, compound, regular, irregular, participles, dynamic, stative, infinitive, gerund. So these are the kinds of verb. We will discuss them separately with different examples. First one is transitive verb. These are those verbs which have an object to receive the action. Transitive verbs are those verbs in the sentence which have objects to pass the action on that. So every sentence which has verb and then object, that sentence contains transitive verb. हर वो सेंटेंस, हर वो जुमला जिसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट हो, जिस पे एक्शन किया जा रहा है, तो वो वर्ब transitive verb होता है. Look at the examples. He rode the bicycle. Here he rode. Okay, rode is a verb. The bicycle, it is an object. So here rode is transitive verb just because it has object over here. Ali kicked the ball. So again, kicked is transitive verb just because it has an object in the sentence. So every sentence which has an object, every verb which has an object in the sentence is transitive verb. Intransitive verb, simply it's the opposite of transitive verb. Intransitive verb do not have an object to receive the action. इन सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता. वी हैव जस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब. ही लाफ्ड, she wrote, they played. So we do not have object over here. So those those verbs which do not have object in that, those verbs are called intransitive verbs. Action verb. These verbs tell what the subject is doing. Action verbs tell us that what the subject is doing, whether the subject is eating or running or walking or whatever the subject is doing. So the action verb means what the subject is doing. जो subject कर रहा होता है, जो भी वो कर रहा है, तो उसको हम action verb कहते हैं. वो हमें action के बारे में बताता है कि वो what is that action. Auxiliary or helping verb. These verbs have no meaning on their own. These are necessary for the grammar structure of a sentence. These modify the meaning of the main verb in some way. They add it before the main verb. Okay, look, auxiliary or helping means we need these verbs to create or to make a proper sentence structure. Without helping verb, we would not be able to make a correct
structure of a sentence. हमारा जो sentence का जुमले का structure होगा वो सही नहीं होगा if we do not use helping verb in that. So helping verb or auxiliary verbs help us to make to construct a complete sentence, complete correct sentence. Okay, the second thing about is this modifies the meaning of the main verb in some way. They add it before the main verb. हमेशा मेन वर्ब के आगे, मेन वर्ब के आगे ही ये ऐड होते हैं मेन वर्ब के साथ. Auxiliary verb itself, it does not have a meaning, but it modifies the main verb in the sentence. These verbs are divided into two groups: primary helping verb or primary auxiliary verbs, modal helping verb or modal auxiliary verbs. Let's discuss primary helping verb. What are primary helping verbs? We use this verb as a helping verb with main verb. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा मेन वर्ब के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. बी, इज, आर, एम, was, were, do, does, did, have, has, had. Like these verbs are primary helping verbs. They are working. Look, we use are. It is a helping verb before main verb. Main verb is working. They are subject. Ali and Aslam have finished the work. Ali and Aslam subject. Have helping verb, finished main verb, the work. Have finished the work. Main verb से पहले we have as an helping verb. I do my work. I have a cat. So if you look at the helping verbs which are used before the main verb to modify the main verb, let's discuss the modal helping verb. These verbs add meaning to the main verb by expressing possibility, ability, permission or obligation. After modal verb, the root form of the verb will be used. मॉडल वर्ब है क्या? मॉडल वर्ब हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कि वदर ये काम मुमकिन है क्या नहीं है, एबिलिटी के लिए, परमिशन लेने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए. और दूसरी बात इसके बारे में क्या है, आफ्टर मॉडल वर्ब द रूट फॉर्म. मॉडल वर्ब जब भी लगी उसके बाद वर्ब की रूट फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं. लुक एट द मॉडल वर्ब्स: can, could, may, might, will, would, shall, should. Shall, it's shall, okay. Must, ought to. So these are modal helping verbs. Let's see क्या use कैसे हुए हैं. Look at the sentences. I can speak English. Possible है ना, I can, मैं कर सकता हूँ. I can speak English. You can is used before speak is a main verb. मेन वर्ब से पहले कैन यूज हुआ है. यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क. यू कैन डू इट. यू डू नो हाउ टू कुक. डू यू नो हाउ टू कुक, ये भी हो सकता है. डू यू नो हाउ टू कुक. सेकेंडली, डू यू नो हाउ टू कुक. डू कैन बी यूज्ड modal verb when there is no modal verb in the सेंटेंस. डू के साथ अगर सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा मॉडल वर्ब है तो हम डू को एज ए मॉडल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. वहाँ पे हम क्या करेंगे, डू वहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब तब यूज़ होगा जब उसके अंदर कोई दूसरा मॉडल वर्ब नहीं होगा. ओके, यू कैन डू इट. यहाँ पे डू ऊपर हमने कहा था यू कैन डू इट वाला सेंटेंस देख के हमने कहा था यहाँ पे कैन भी उसके अंदर आता है. कहाँ थी मैं, ओके सॉरी. तो यहाँ पे कैन हमारे पास मॉडल वर्ब है, डू हमारे पास मेन वर्ब है. वेरी गुड. कैन आई यूज योर पेन प्लीज. तो कैन यहाँ पे परमिशन के लिए यूज हुआ है. सो वी यूज मॉडल वर्ब्स फॉर परमिशन, फॉर ऑब्लिगेशन, फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी एंड फॉर एबिलिटी. इवन फॉर आस्किंग क्वेश्चन कैन आई, तो परमिशन, क्वेश्चन,
Then we have linking verb or connecting verb. These verbs connect or link subject to a noun object in a sentence. ये थोड़ा बहुत auxiliary और helping verb से related है. Look, these verbs connect or link a subject to a noun object in a sentence. तो noun object noun ही होता है. तो link वर्ब को किसी सब्जेक्ट को किसके साथ लिंक करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ. लुक एट द एग्जाम्पल. इज, आर, एम, सो, डू एक्सेट्रा आर लिंकिंग वर्ब्स. Ali is a football player. I am going to school. So you can easily see is और am यहाँ पे as a linking verb use हुए थे. I को going to school आपके पास ऑब्जेक्ट है. Ali यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर आपके साथ ऑब्जेक्ट है. तो इन दोनों को कनेक्ट किया. अगर आप इज और एम को हटा दें तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ख़राब होगा, तो इतना मीनिंग भी हमें क्लियर नहीं होगा. रेगुलर वर्ब्स. These verbs follow standard pattern in its inflection. These form follows the regular pattern of words. These form the past tense by adding d or ed. रेगुलर पैटर्न मीन्स कि हमने वर्ड के स्पेलिंग को ऐसा चेंज करना नहीं होता. एंड में हमें अगर कोई वर्ड पास्ट पार्टिसिपल अगर ऐड करना है तो हम एंड में ऐड कर देते हैं. आगे के जो इसके वो लेटर्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते. लुक एट द एग्जाम्पल. फेड, फेडिड, प्ले, प्लेड, जॉइन, जॉइंट. सो वी जस्ट एड ed एट द एंड. सो रेगुलर वर्ब के अंदर हम वर्ड लेटर्स का तो रेगुलर पैटर्न ही यूज़ होता है और एंड में हम उसको पास्ट बनाते हैं या फिर कुछ भी अगर हमने उसको ऐड करना डी लगाना हो या ed लगा के पास्ट पार्टिसिपल में जब चेंज करते हैं तो हम उसमें लेटर्स को नहीं छेड़ते, सिर्फ एंड में लेटर्स लगा देते हैं. Irregular verb is the opposite of regular verb. These verbs do not follow the standard form in its inflection. Its forms follows a different pattern. It does not follow regular pattern. इसके अंदर रेगुलर पैटर्न यूज़ नहीं होता जो कि इरेगुलर वर्ब्स में होता था. अब इरेगुलर में लुक, गो, वेंट, गॉन. गो में GOWENT, GONE, तो टोटली स्पेलिंग इनके चेंज होते हैं. मेक, मेड, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. सो इरेगुलर वर्ब में हम लेटर्स को चेंज करते हैं, स्पेलिंग चेंज हो जाती है. और यहाँ पे हम सिर्फ स्पेलिंग को लेटर्स को या फिर वर्ड के लेटर्स वही रहते हैं, हम एंड में सिर्फ ऐड करते हैं. यहाँ पे हम चेंज करते हैं. Compound verb. We learned about compound noun, then compound adjective, compound pronoun. Up again we have compound verb. तो अभी तक उम्मीद है कि आप लोगों को compound meaning तो clear हुआ होगा. अगर नहीं हुआ होगा go back and watch the videos. Okay, what is compound verb now? When a subject sentence has two or more verbs joined together by conjunction, it's called compound verb. Compound verb एक ही सेंटेंस के अंदर जब एक साथ मिलाया जाए, कंजंक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स के साथ उनको मिलाया जाए, सेंटेंस के अंदर अगर दो वर्ब यूज़ हुए हैं तो उनको हम कंपाउंड कहेंगे. ज़रूरी नहीं कि वो एक साथ जुड़े हुए हो, जैसे नाउन में हमने पढ़ा था. यहाँ पे सेंटेंस के अंदर दो होते हैं, वहाँ नाउन के साथ हम उनको या तो हाइफन लगा कर मैच करते थे या फिर वर्ड्स को एज इट इज़ साथ मिला लेते थे, नया वर्ड्स फिर बना. जैसे ब्लैक बोर्ड पे हमने किया था, सनराइज हमने कहा था. सो टू डिफरेंट वर्ड्स को मिला के न्यू वर्ड्स बनाया था. यहाँ पे सेंटेंस के अंदर टू वर्ब्स जब आ जाए तो उसको कंपाउंड वर्ब कहते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो एक साथ लगे हों, लेकिन एक सेंटेंस में मौजूद होना ज़रूरी है. Sarah baked cookies and ate them up. So here we have compound verb just because we have two verbs over here. The class cheered and clapped once the examination ended. Look, here we have three verbs. तो इसी तरह अगर if you have more than two verbs in the sentence, it means that you have compound verb. Then participle. What is participle? There are two types of participle. Present participle, we discussed about it, I think. And then past participle. Present participle, words ending with ing. In past participle, words end with ed, d, t, e, n. Past करने के लिए, present करने के लिए ing वाला फर्स्ट, present में ing, past में ed, d, t वगैरह हम लगा के वर्ड्स को चेंज करते हैं.
Participle can be used and adjectives. Participle verbs जो होते हैं हम उनको as an adjective यूज़ करते हैं, as an describing words यूज़ करते हैं. Look at the first sentence. The rising sun. The rising sun. Past participle और present participle दोनों आ गए आपके पास. The boiling water. The boiled water. The broken glass. So participles are, we have two participles, present and past participles, and changes का तरीका मैंने आपको बता दिया. And remember one thing, participles always used as an adjectives. Dynamic verb. What dynamic का मतलब तो आपको पता है. Dynamic verb means that verb which describe an action. That verb which describes an action. Example, Ali is chasing the ball. He is chasing. Describe कर रहा है ना, chase कर रहा है, पीछे जा रहा है. Eat, walk, run, sleep. तो ये dynamic verb के अंदर आते हैं. Simple action verb भी ये हैं और dynamic verb भी ये हैं. Stative verb. Stative verb describe a state rather than action. It shows state or existence. Look at the example. Ali wants some ice cream. यहाँ पे actions की बात नहीं होती, यहाँ पे state की बात हो रही है कि अली को आइसक्रीम चाहिए. यहाँ पे कोई action अली नहीं कर रहा, सिर्फ मांग रहा है. Hate, like, prefer, no, seem, etc. So such kind of verbs are called stative verb, which shows statement. The infinitive. The verb usually preceded by to. जिस किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब के आगे टू अगर लगा है, दैट इज इन्फिनेटिव वर्ब. लुक एट द एग्जाम्पल. टू रन, टू सिंग, टू रीड एक्सेट्रा. आई नीड टू रन एवरी डे बिकॉज आई एम वेरी हेल्दी. मुझे भागना ज़रूरी है, रोज़ वॉक पे जाना ज़रूरी है. टू रन, इट इज़ इन्फिनेटिव. आई एम गोइंग टू स्लीप. To read stories were her passion. So here each verb is preceded by to run, to sleep, to read. So it is the infinitive verb. Gerund, the 30th number is, it is the ing form of verb which functions as noun in sentence. Gerund is the ing form of verb but it functions as noun. है तो वर्ब आईएनजी की शक्ल में, जैसे रनिंग है, ईटिंग है. अगर हम सिंपल सेंटेंस में अगर मैं कहूँ आई एम रनिंग, तो यहाँ पे वर्ब है. लेकिन जिरॉन्ड सेंटेंस के अंदर जब ये यूज़ होता है तो ये नाउन का काम करता है. वो कैसे? रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो यहाँ पे रनिंग वर्ब है लेकिन यूज़ एज ए नाउन हुआ है. जॉगिंग इज़ माई हॉबी. तो यहाँ पे जॉगिंग क्या है आपके पास, अगर हम इसको वैसे ही ले लें सिंपली, तो ये हमारे पास वर्ब है बट इट इज़ यूज्ड ओवर हियर एज अ नाउन. सो gerund is that kind of verb which has ing form of verb and functions as noun in the sentence. So it was all about noun. We discussed the main points, we discussed the definition and main 13 kinds of verb. Sorry, I was saying noun, I'm sorry. So 13 kinds of verb. So आपने इसको पढ़ना है, इनको याद करना है कि क्या है क्या नहीं. I will give you the slides in the description box. इंशाल्लाह आप लोगों ने वहाँ से भी ये स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाके अपने लिए भी नोट्स बना सकते हैं. Remember one thing, हमेशा की तरह I still given 2 or 3 sentences, not more than that. You have to make at least 5 sentences from each kind of verb and make sentences from that too. Okay? कोई भी मसला हो, you can easily ask. Thank you so much for listening. See you in the next video, inshallah. Tata, bye bye.